वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट में पर्टिकुलरली नैस्डैक और चाइना के मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जो ज़्यादातर सिर्फ इंडिया के मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं और अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। बहुत सारे लोग अब इंडिया के बाहर भी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि एफआईआई जो है इंडिया से पैसे निकाल के, इंडिया के मार्केट से पैसे निकाल के यूएस और चाइना के मार्केट में डाल रहे हैं क्योंकि वहाँ की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही है उनको। और जो भी इंडिया के पॉलिसी रिसेंट पॉलिसी चेंज है उसको देखते हुए बहुत सारे एफआईआईज जो है अपने पैसे निकाल के यूएस और चाइना के मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके कारण हमारा इंडियन मार्केट गिरा हुआ है या गिर रहा है कंटिन्यू। वो देख हम लोगों ने देखा है। तो ऐसे में हमको समझना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है और लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि हमें भी इंडिया मार्केट से निकल के बाहर के मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इस चीज़ को समझ रहे हैं और वो चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन। तो आप भी अगर उनमें से एक हैं जो चाहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में इंडिया के अलावा अगर बाहर के कंट्री में एक्सपोज करना चाहते हैं अपने पैसे को या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नैस्डैक और चाइना के मार्केट में हम कैसे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। जैसे इंडिया का निफ्टी 50 है, वैसे यूएस के जो टेक बेस्ड कंपनीज हैं उनका जो इंडेक्स है उसको नैस्डैक बोलते हैं और उसमें ये सारी कंपनियां आती है, आपकी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, टेस्ला, राइट, और भी कंपनियां हैं। तो यूएस एक इनोवेशन बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे की टेक्नोलॉजी जो है पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट की जाती है और यूएस की जो टेक मार्केट है या यूएस की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे है बाकी कंट्री से। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से अगर हम नेस्डेक को एक्सप्लोर करते हैं या नेस्डेक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सेम चीज चाइना। चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है, ई कॉमर्स में लीडर है, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जैसे अलीबाबा, टेंसेंट, बीवाईडी जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां चाइना मार्केट में हैं। अगर हम ये अपने दिमाग से पेट्रोटूरिज्म वाला चीज एंगल निकाल दें और चाइना को एक प्योर फिनेंस की दृष्टि से देखें तो चाइना और यूएस, राइट, दो बड़े ग्लोबल लीडर्स हैं अभी, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें और हमारा जो डिसीजन है, राइट, पैसे को इन्वेस्ट करने का डिसीजन जो फंड मैनेजर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ले। इसलिए हम डायरेक्ट यूएस की स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बजाय हम म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हैं क्योंकि जो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनको इस चीज़ की हमसे कहीं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम नो उनको उनको ये डिसीजन लेने का क्षमता दें। उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनका एक्सपर्टीज ज़्यादा होता है, इसलिए हम म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे बजाय कि इंडिविजुअल स्टॉक को हम अपने से सिलेक्ट करके पैसे डालें। म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी होती है फंड ऑफ फंड, जिसमें इंडियन म्यूचुअल फंड्स जो है इन्वेस्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट में ईटीएफ के थ्रू या यूएस के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं फंड ऑफ फंड्स, राइट। तो अगर हम यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक फंड है, जिसको हम लोग मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड बोलते हैं। उसके बाद है एडिलवाइस का यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड, देन मीरा असेट, एनवाईएस फैंग जो कि फंड ऑफ फंड है, देन फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड्स। तो ये चार फंड्स हैं और हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा बेस्ट है और इसमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अपन जैसे चलते हैं कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक फंड ऑफ फंड, इसमें अगर इन्वेस्ट करना है हमको, तो आप देखो कि मोतीलाल ओसवाल एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे थे इसमें, लेकिन अब हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन हम देखेंगे। तो देखोगे कि ये जो है ओवरऑल जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से करीब 22%, 22.66% रिटर्न दिया है ओवरऑल, और एक साल में 22% रिटर्न दिया है, 2 साल में 29%, 3 इयर्स 28% एंड 5 इयर्स में 21%। ओवरऑल ये 20 और 30 के बीच ही रिटर्न दिया है, जबकि वहीं पे बेंच मार्क आपका जो है वो एक साल में निगेटिव रिटर्न दिया है और 2 साल में 5%, 3 साल में 8% और 5 साल में 13% बेंच मार्क ने रिटर्न दिया है। तो आपका एवरेज रिटर्न इसका 22% था नेस्डेक। और ये प्राइमरली नेस्डेक में इन्वेस्ट करता था, नेस्डेक 100 में। बट इसमें हम अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि आप जैसे देखोगे तो ये बोलता है यू कैन नॉट ट्रांजेक्ट द रिस्पेक्टिव स्कीम ड्यू टू स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर एसआईपी ऑन एक्सचेंज। क्या हम लमसम के थ्रू कर सकते हैं? नहीं। यू कैन नॉट ट्रांजेक्ट द रिस्पेक्टिव स्कीम ड्यू टू द स्कीम नॉट अवेलेबल फॉर परचेज। तो बेसिकली बोल रहा है कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड म्यूचुअल फंड में आप नया एसआईपी या म्यूचुअल फंड नहीं स्टार्ट कर सकते या और उसमें पैसे नहीं डाल सकते। इसका रीजन क्या है?
तो इसका रीजन है, देखो यहाँ पे SBI International, no, let's go to the top. Yeah, SBI Mutual Fund and Motilal Oswal Mutual Fund pause investment in selected international funds. तो इन्होंने अभी पैसे लेना बंद कर दिया या फर्दर इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है। इसका रीजन क्या है? तो इफ यू सी व्हाई they have stopped, so there is some reason, guidelines by RBI, yes, regulatory caps driving suspension. The limit defined by the Security Exchange Board of India, SEBI, restrict the mutual funds industry overall exposure to overseas fund at 7 billion, to overseas exchange traded fund at 1 billion. राइट तो इन्होंने सेबी ने ये रूल लगा रखा है कि 7 बिलियन से ज्यादा कोई म्यूचुअल फंड ओवरसीज सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में 1 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और मोतीलाल ओसवाल का जो है एक प्राइमरी नो ओवरसीज नेस्डेक में डालने के लिए एक म्यूचुअल फंड था, जो वो लिमिट रीच कर चुका है, तो हम अब उसमें और इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमारा ये ऑप्शन निकल जाता है कि हम मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। दूसरा ऑप्शन है एडिलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड। So let's see that. Yes. So this is the Edelweiss US Technology Equity Fund of Fund, Growth Fund. And इसका आप देखोगे तो NAV है 24 रुपीज़ का। इसका स्टार्ट किया है 2020 में शुरू हुआ था। एक्सपेंस रेशियो 2.35 है। नॉर्मली ओवरसीज फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अधिक होता है। ये जो फीस होता है जो म्यूचुअल फंड हाउस लेती है इस फंड को मैनेज करने के लिए, इसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो 2.3 काफ़ी ज़्यादा है। देन इनका AUM है इतना करोड़ का, नो। एंड एग्जिट लोड अगर 90 डेज से पहले अगर आप पैसे निकाल लेते हैं, लगभग 3 महीने से पहले, तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अदरवाइज आप 90 डेज के बाद निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। एंड रिस्कोमीटर इस हाई रिस्क फंड्स, और इसका रिटर्न आप देखोगे तो लमसम अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो 1 साल में 6% दिया है, 2 साल में 30% दिया है, 3 साल में लगभग 16% दिया है, और 5 साल में 23% दिया है। ऑन एन एवरेज जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 2020 से, तब से लेके ये 21% लगभग रिटर्न दिया है। वहीं बेंचमार्क देखोगे तो आप काफी कम है, बेंचमार्क को इसने काफी अच्छे से बीट किया है। सो लुक्स लाइक गुड रिटर्न, गुड फंड्स, पर इसका एक्सपेंस रेशियो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। आप SIP मोड में देखोगे तो SIP मोड में इट हैज बीटन द बेंचमार्क ऑलवेज, एंड एवरेज रिटर्न इट हैज गिवन अराउंड 19% इन SIP मोड। आपका इसका होल्डिंग्स देखोगे तो ज्यादातर कहाँ पे डाल रहा है? JP मॉर्गन यूएस टेक्नोलॉजी फंड में ये पैसे डालता है। ओके, सो दिस इज वन ऑप्शन, Edelweiss US Technology. Let's see some other fund where we can Mira Asset. Mira Asset का एक म्यूचुअल फंड है जिसमें हम जिसके थ्रू हम यूएस में पैसे डाल सकते हैं। एंड लेट्स सी, यस, सो मीरा असेट NYC फैंग फंड ऑफ फंड, इसको डिटेल देखते हैं हम। तो ये 2021 में ये फंड शुरू हुआ है। इसका NAV अभी 23 रुपए चल रहा है, मार्क टॉप से काफी गिरा हुआ है, 30 से लेके अभी ये 24 रुपए तक आ गया है इसका NAV। एंड इसका एक्सपेंस रेशियो 0.45% है, विच इज लुक्स क्वाइट ओके और गुड। एंड देन एग्जिट लोड है, आपको 6 महीने कम से कम रखना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी वन मोर म्यूचुअल फंड वेयर वी कैन इन्वेस्ट, हाउ इट इज। So if we go to our, yeah, Franklin India Feeder Fund. So Franklin India Feeder Fund have a different market to explore. One is the European market, another is US market. So we are not focusing as of now European market. We are only focusing on the US and China market. So let's see. This is the US market one. How is the performance and what all the things, parameters we will see. It has also fallen like from top to current position. It has fallen around 51 from top of 72. It has fallen to currently 72, 60, around 70. Yeah. So this has 66 NAV right now. Date of inception is 2012, so quite old one. Good. And expense ratio is quite high, 1.5. Normally, as I said earlier, overseas fund will have a higher expense ratio. Then AUM is around 4,000 crores, and exit load is around 1% for 1 year. And in lump sum, if you see that it has given return 4% in 1 year, second 2 years, 23%, 3 years, 12.
So AUM is around 4,000. Exit load is 1%. As usual, like equity market is at high risk on riskometer. So if you see the lump sum investment returns, on an average, it has given around 15%, 15% के आसपास, और 10 साल में 12%, 5 साल में 15%, 3 years around 12%, 2 years में 23%, 24% around, and 1 year में around 4%. So lump sum is this is the return. Let's see in SIP mode almost for no 10 years old fund. This has given 15%, so which is quite good, right? So performance wise looks good, but expense ratio looks high to me. And where they invest, so it's basically US opportunity fund. They're putting the money. So which all the funds we saw in US market where we can put money in the mutual fund via is the Motilal Oswal NASDAQ 100. Then we saw the Edelweiss US Technology Equity Fund of Fund. Then Mira Asset NYC FANG and Franklin Feeder Funds. So Motilal Oswal has stopped taking the further investment, so that is not in the options. So we are left with the three other options, that is Edelweiss, Mira Assets, and Franklin India. So to me, Mira Asset looks good because of less expense ratio, and it has the exit load also less. So that is one option. So this is how we can invest in US market via mutual fund from India. How to invest in Chinese market via mutual fund. So this is our next. And which are the top mutual funds, right? So to invest in China, you need mutual funds that gives exposure to Chinese stocks like Alibaba, Tencent, JD.com, BYD. These are the top companies of China and growing companies. So we will be looking for some mutual funds who puts money in these companies, right? So our top mutual funds for China investments are like Edelweiss, Great China Equity Offshore Funds. Let's see. So coming to the China market, yes, we have Edelweiss Great China Equity Offshore Funds. We'll see in the details performance. For now, let's see what all the options we have. Mira Asset. So Mira Asset, let's see. Yes, Mira Asset Hang Seng Technology Fund of Fund. That is second option we have. Then Nippon India. So Nippon India ETF this is there, and then we have ICICI. So if you see ICICI's global market, it invests in China. They have some exposure, but it's not all that everything is in China market. So these are the four options we have, and we will see one by one in detail. So Edelweiss. So if you see NAV is 41. It has fallen from top to right now quite bottom, and it started recovering. If you see the graph, and it has started on 2009. Expense ratio is 2.33, which is quite high. AUM is around 1.5 crores. Exit load is 1% till 90 days. After 90 days, if you are withdrawing, there is no exit load. If you are in mutual fund investor, you must be understanding these parameters, right? If not, then we can talk more. You can connect with me. You can leave in comment your questions. And performance wise, if you see that it's more than 15 years now, and since inception it has given around 9.5% on an average. So if you see 15 years 9%, 10 years 8% around, 5 years 5.5, 3 years around 3%, 2 years around 5%, and 1 year 2%. And if you see, sometimes it has not beaten the benchmark. There are many occasions where it has not beaten the benchmark, right? So, and if you see SIP mode looks okay. Even like last 5 and 10 years, if you see, it has not beaten the benchmark. And since the exception, it has given in SIP mode around 9%. Okay, let's come to the other funds. So if you want to see Mira Asset, let's close this. So Mira Asset, yes, Mira Asset Hang Seng Technology ETF Growth Fund. It's overseas fund, and NAV is 12 rupees, and it's at almost at top of current NAV is at the high, lifetime high.
and it has its inception like it started on 2021. Expense ratio is around 0.53%, and AUM is around 86,000 crores, 86 crores, not 86,000 crores. Just looks like quite low, 86, and exit load is after 90 up to 90 days 5.5%. After 90 days, no exit load. If you see the lump sum investment return since inception is around 7.4%, and in last 3 years, I think it is taking average of 20 years. That's why it is so low. Last 3 years it has given around 24%, and 2 years it has given 33%, 1 year 93%, and it has beaten the your benchmark in all the years. So looks good. And in SIP mode, if you see, it has beaten the index at quite high, and it has given good. So this looks good. Mira asset, I think in US market also we had seen the Mira asset one, and here we are seeing China market one. Okay, how is the holding? So Mira asset Hang Seng Tech Fund. So basically it will put in technology funds. So this looks good option to invest. Then Nippon India. So Nippon India ETF funds, it's a silver fund, right? There is no direct China investment fund. So this maybe we can ignore if you want to invest in China. So let's see if you want to see further where they are putting the money. So Nippon India silver ETF, basically it's following the silver price in the market. So we can ignore this. Then there is ICICI Prudential Global Advantage Fund, which have exposure to China. Yes. So ICICI Prudential Global Advantage Fund, it has exposure to China, but it's not only the China market, but it also invests in other market. So let's see what all the parameters it has. So first top holding, let's see where all the places it puts. ICICI Prudential US blue chip, so it invests in blue chip around 33%, and Nippon India Hang Seng, around Hang Seng index they are putting around 27%. Then in Japanese equity market they are putting around 19%, and Asian market they are putting 18%. So if you are looking for good diversification, then within the mutual fund it is quite diversified. It is tracking US, China, Japan, and Asian market, but not focused on the China market. So we were looking some fund which is purely focused on the China market. So in that sense, I think this disqualified. So we found basically two mutual funds which are focusing on China market primarily. That is your Edelweiss Great China Equity Fund, this one, and second one is our Mira set. So for US also Mira set has good option, and for yes, Hang Seng or China market also it has good option, right? So this is how we will be investing, or these are the mutual fund through which we can explore US and China market, which is right now trending or getting trend. An important thing to consider before investing, current exchange risk. Like since these funds invest in US and China, rupee depreciation can impact returns. Expense ratio, international funds will have slightly higher fees. That is what we saw in case of no Edelweiss and Franklin. But Mira said look Mira said's one expense ratio and exit load looks okay, considerably okay. And while investing in the global market, we should understand the geopolitical risk, US and China. Trade wars, economic policies can affect performance, right? Then investment horizon, like idea for investing in such no market or outside, if you are looking for, the investment horizon should be 5 to 10 years in your mind. So you should not get panic within 1 or 2 years. So if you want to know about this mutual fund or mutual fund investment in India or outside, then you can connect with me via comment. I am MFI registered in ARN mutual fund distributor. So I can help you with your mutual fund investment, and I can guide you. So please do reach out to me for any question related to the mutual fund investment. And
And let's see our final thoughts, some pro tips. So global investing helps in portfolio diversification and higher returns. So it's important in, if you see that everything is digitalized now and we have exposure to invest in global market, so it gives good diversification. So investing in US and China market and taking part or taking advantage of their growth is beneficial for our portfolio building or our returns, good returns. That is what we see, that right, big investors or foreign investors are taking money out from India and investing in US and China. So these are the things I wanted to share in this video. Thank you so much for watching till the end. Hope you got some idea and thinking of investing in US and China market, then this video might be helpful for you. And yeah, do consider your risk and risk appetite and your understanding of these markets before investing. So thank you so much for watching. Do like, share, and subscribe my channel. And I will come up with more interesting video, more knowledgeable video where you can learn more. Thanks for watching. Let me know in the comment if you have any questions. Would you prefer to invest in NASDAQ or China? That you can share in the comment. Follow Siyona Academy, this YouTube channel, for more finance and investing insights. Thank you so much. See you in the next video. Bye.